अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाकिस्तान स्टडीज़ 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स 101 की फ़ाइनल टर्म की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो मैं फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपने देखना है कि 60% जो है ना ये आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। 60% आपका यहाँ पे शामिल है ये, और 60 नंबर का भी पेपर ही होगा, ठीक है। सिलेबस आपने देख लेना है, 16 से लेकर 29 चैप्टर तक आपका सिलेबस है। टोटल मार्क्स होंगे 60, ठीक है। पेपर पैटर्न आपने देख लेना है, ऑब्जेक्टिव 40 होंगे, ठीक है। अटैम्प्ट आपने करने हैं 33 और 7 की क्या होगी, चॉइस होगी। ओके हो गया। सब्जेक्टिव है, उसके बाद 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। आपने 4 अटैम्प्ट करने, 2 की चॉइस होगी, और ये इस तरह 12 नंबर बन जाएंगे, और ये यहाँ पे इस तरह 15 नंबर बन जाएंगे लॉन्ग के, ठीक है। तो हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने पहले क्विजेज जो है अपने सारे जितने भी 16 से लेकर 29 चैप्टर के बीच में आ रहे थे, पास्ट पेपर सबको जो है एक ही फाइल में हमने जोड़ के आप लोगों के लिए आसानी के लिए ये फाइल बना दी है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास देख लें क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 250। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज प्रोमुलगेटेड। स्टार्ट हुआ था ये 8 जून 1962 को, और एक और सवाल भी बन सकता है, प्रोमुलगेटेड की जगह अगर लिखा आ जाए ओब्रोगेटेड, इसकी जगह ना ये वाला जो है इसकी जगह अगर ये लिखा आ जाए ओब्रोगेटेड, तो फिर आपने लिखना है 25 मार्च 1969। ये आपने याद रखना है बात। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, नॉन मुस्लिम्स ऑब्जेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्यू टू द लेसर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, मिक्सिंग ऑफ रिलीजन इन स्टेट अफेयर, यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन डिड वन यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस, 30 अक्टूबर 1955। ऑप्शन करेक्ट 14 अक्टूबर 1955, ठीक है। यहाँ पे ये है कि असल में जो है वो ऑप्शंस में जो है ना ये चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन असली जो है वो करेक्ट है, और ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये आपने यहाँ पे बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु इज़ अथोराइज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट लाइज इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी पीपल, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 12 मार्च 1949। नेक्स्ट है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ न्यूट्रल स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, लियाकत अली खान। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बोगरा फार्मूला 1954 में जो था उसका क्या पर्पस था, टू रिजॉल्व द डेड लॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इन अपर हाउस देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन of 5 units, in lower house population will be represented. Next है, the candidate for the post of president of Pakistan must be a Muslim होना लाजमी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, which kind of parliament was adopted under the 1956 constitution, bicameral। नेक्स्ट आ गया, what rule was observed for representation of provinces in the National Assembly under the 1956 constitution on the basis of principle of party। Next है, in which year language movement started in East Pakistan, 1952। Next है, according to the objective resolution sovereignty belongs to whom, none of these, इसमें ऑप्शन none of these है, लेकिन असली आंसर जो क्या है वो गॉड है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट है, which kind of parliament was suggested by the first basic principles, bicameral। Next, which constitution is considered as the presidential constituent of Pakistan, Constitution of 1962। Next, according to 1962 Constitution, all the executive, legislative and judicial powers were entitled to President. When the second Constitution Assembly came into existence 1955।
Next, who was given the power to impeach the president under the 1962 Constitution? National Assembly. What was the primary task of Basic Principle Committee in 1949? To evolve a standard formula representation of both wings of Pakistan. When the first BPC report was presented to the Constituent Assembly of Pakistan, 1950, according to the objective resolution, Pakistan shall be a federation with autonomous unity. Next हमारे पास the objectives resolution has been added in the preamble of which constitution of Pakistan? All constitution यानी कि 3 constitution है, ठीक है, 1956 का, 1962 का, 1973 का, ठीक हो गया. नेक्स्ट है अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट है व्हेन लैंग्वेज वाज सजेस्टेड बाय कायद आज़म एज द नेशनल लैंग्वेज टू क्रिएट यूनिटी एंड हारमोनी इन पाकिस्तान, उर्दू. नेक्स्ट आ गया हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, 69 to 79. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला लेजिस्लेटर वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेज, 2 हाउसेज. नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे अंडर दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 1 हाउस, ओके हो गया. नेक्स्ट है हु विड्रू द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज रिपोर्ट, लियाकत अली खान. नेक्स्ट है विच एक्ट वाज मॉडिफाइड एंड प्रोमulgated एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट है व्हेन डिड अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड बेसिक डेमोक्रेसीज सिस्टम इन पाकिस्तान, 1959. नेक्स्ट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन, February 1960. Next, who imposed first martial law on October 7, 1958? General Iskandar Mirza. In which court Maulvi Tamizuddin challenged the dissolution of first Constituent Assembly? Sindh Court. 1956 Constitution had 234 articles and 6 schedules, ठीक हो गया. Who dissolved the first Constituent Assembly of Pakistan? Ghulam Muhammad. Which BBC report is also called as Muhammad Ali Bogra formula, third BBC report. Next, when did the Political Parties Act introduced in Pakistan, 1962. Next, how much area is covered by forest in Pakistan? 4 to 5%. Next, the first gas reserves in Pakistan were found at Sui. Next, the Duran line between Pakistan and Afghanistan was drawn in 12 November 1893. Next, what percentage of population of Pakistan reside in rural areas? 70%. Federal Sharia Court was established in 1981. Next, when the first general election was held in Pakistan, 7 December 1970. Next, China is the northeast of Pakistan. Its boundary length with Pakistan is 600 km. Next, the upper case of parliament is called as Senate. Lower house का होता है National Assembly. Next, मोहल्ला सलात committees were formed under the rule of General Zia-ul-Haq. Next, third Cholistan and third deserts are located in southeast of Indus Plain. Next, when Usher was imposed on agriculture products, 1983. Next, when local bodies election were conducted during Zia-ul-Haq regime in Pakistan, 1979, which is the highest peak of Pakistan. K2, who became the first civilian chief martial law administrator, Zulfikar Ali Bhutto. Next, elective bodies disqualification order EBDO was introduced in the period of President Ayub Khan. Next, when did the Constitution of 1973 in force in Pakistan? 14 August 1973. Next, what was the status of 1973 Constitution during 1977 to 1985? Suspended. Next, a financial bill is presented in the National Assembly under the 1973 Constitution of Pakistan. Next, total area of Pakistan was 796095 square kilometer in 1947. Next, Pakistan People's Party won 81 number of seats in general elections of 1970. Next, Zia-ul-Haq conducted non-party basis elections in February 1985. Next, what should be the minimum age of the president according to the 1973 Constitution? 45 years. Next, who promulgated the longest martial law in Pakistan? General Zia-ul-Haq. Next, China is the north, ये वाला हो गया, ठीक है. हु इम्पोज सेकेंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? जनरल अयूब खान.
Which province of Pakistan is densely populated? Punjab. Next, who was the second Governor General of Pakistan? Khwaja Nazimuddin, September 1948 से October 1951. Next, which of the following city is rich in gypsum? Jhelum. The second Constituent Assembly was constituted in 10 May 1955. Next, half of the senators are elected after every 3 years. Next, when the interim constitution was enforced in Pakistan, 21 April 1972. Next, which party won more number of seats in general election of 1970? Awami League. Next, when did Yahya Khan hand over power to Zulfikar Ali Bhutto? 20 December 1971. Next, water logging and salinity is one of the problems of agriculture. Next, who was the interim Prime Minister during the period of April-May 1993? Balkh Sher Mazari. Next, which pact was signed between Pakistan and India after war of 1965? Tashkent Pact. Next, General Pervez Musharraf conducted referendum and general elections of National Assembly in April 2002. Next, who initiated the policy of nationalization? Zulfikar Ali Bhutto. Next, who abrogated 1956 Constitution of Pakistan? Iskandar Mirza. Next, total area of Balochistan is 347.2 square kilometer. Next, the archaeological heritage of Harappa is located in Sahiwal. Next, under which article the objective resolution become the permanent part of Constitution of 1973? 2A of 8th Amendment. Next, when did Ayub Khan take over as Chief Marshal Administrator CMLA? 1958. Next, Baitul Mal was established for the first time in the region of Janazewla. Next, in which of the following cities all reserves are found in Pakistan? Select the right group. Jhelum या वाली अटक. 1965 Constitution provided lists including federal and provisional. How many members ये होगा था? In which city the first meeting of Constitution was held on 11 August 1947 in Karachi? According to 1962 Constitution Advisory Council for Islamic Ideology was a recommendatory body. Which kind of parliament was adopted under the 1956 Constitution? Unicameral. Next, what was the reaction on the Bogra formula? इसमें all of these है, ठीक है. Next, who dismissed the cabinet of Khwaja Nazimuddin? Liaquat Ali Khan. Who was Ghulam Muhammad, Governor General? Next, all Muslim League leaders were not in favor of orthodox state. Orthodox state. नेक्स्ट मैंने पॉइंट दिया हुआ है कि मस्ट रीड हैंड आउट आपने लाजमी जो है इसको पढ़ने, ठीक है, ये देख लें. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है. पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1949. और ये तीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1956 का, 62 का, 73 का, तीनों आपको लाजमी आते हैं. ओके हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफिकल लैंड बाउंड्रीज एंड नेबरहुड्स, इसके बारे में आपको पता हो, ठीक है, ये चीज़ें. नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर्स, इनके बारे में आपको पता हो. शॉर्ट सवाल के लिए आपने हैंड्स आउट लाजमी रीड करने, ठीक है. और ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्विज़ेस को ये आपके लिए किया है, ठीक है. तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे जो है वो जो वीडियो में डालूँ सबसे पहले आपको शो हो सके. नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम।